Hello students, आप class 9th, most welcome in this class video lecture number 3, chapter same motion. Student, you are already provided different materials, written materials in the form of PDF or in the form of video. I hope you have had enormous materials, content material to write and to read, to understand. Now, it is our attempt to give you explanation in detail. As you know, without explanation, without knowledge of concept, you can not achieve sufficient knowledge of any subject. So, read your materials given in content or in book and accept means make your concept clear. So today, motion. In previous lectures, we have said many things about motion, but here mainly there are two types of motion. Number one, uniform motion, and number two, non-uniform motion. Students, uniform motion is also called constant motion. Similarly, non-uniform motion is also called accelerated motion. When we want to define uniform motion, if any body covers equal distances in equal intervals of time, this motion is called uniform or constant motion. Suppose you are biking in empty space, means where there is no crowd, and you are traveling at a constant speed. Constant speed means at 60 km per hour, and there is no increase or decrease in speed, then this type of speed, which is constant at 80 km per hour, so this type of speed is called constant speed, and the motion is called uniform motion. For example, here we have taken A, B, C, D points. All the points are at same distance, 10 km, 10 km and 10 km. It means these are equal distances, and any object covers AB, BC and CD in 5 minutes. Students, M means minutes, and next 10 km again 5 minutes, next 10 km again 5 minutes. So students, remember here distances are equal and time is also equal. So we can say this type of motion is called uniform motion. Okay students, and if we want to draw this uniform motion, suppose we have distance and time, some values, कुछ values हमारे पास, suppose in case कि distance in kilometer and time in hours, or distance in meter, time in second given है, तो हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? आपने क्लास 8th में ग्राफ प्लॉट किया होगा, व्हेन आपने जब x एंड y की वैल्यूज ली हैं और ग्राफ बनाया है. वहाँ पे जब ग्राफ करते थे तो ओरिजिन से x एक्सिस, ओरिजिन से y एक्सिस, अगर इन केस यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, x एक्सिस को टाइम लेंगे, y एक्सिस को डिस्टेंस लेंगे, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. दिस शोज यूनिफॉर्म मोशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इट इज क्लियर. आई थिंक it will be clear for example and graph. Now we come to non-uniform motion. Here students, non-uniform motion, according to definition, a body has non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. Students, give attention here. Unequal distances and equal interval of time. In case of non-uniform, distance or time, one of them must be unequal and one of them must be equal. तो here यहाँ पे क्या है, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस अनइक्वल है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन टाइमिंग इक्वल है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वेयर जबकि आपने यहाँ पे देखा यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस. हियर इन दिस यूनिफॉर्म मोशन timing and distances both are equals, but here
distance unequal and timing equal. For example, suppose we have A, B, C, D, E points. AB 20 kilometer, BC 5 kilometer, then CD 10 kilometer, and again DE 3 kilometer. Clearly distances are unequal. What any object, any body covers these unequal distances in equal interval of time. Means कोई भी ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करता है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर अगेन 5 मिनट्स में कवर करता है, 10 किलोमीटर फिर 5 मिनट में, एंड लास्ट 3 किलोमीटर फिर 5 मिनट्स में. Means students, here in this example it is clear that distances are unequal, कहीं कम कहीं ज़्यादा, बट टाइमिंग विल रिमेन सेम. लेकिन टाइमिंग जो है हर हाल में 5 मिनट्स ही है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और स्टूडेंट्स, अगर हम इस मोशन को ग्राफ में प्लाट करेंगे तो बाय सेम वे जब हमारे पास डिस्टेंस का डेटा होगा एंड टाइमिंग का डेटा होगा तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, कर्व शेप में ग्राफ मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिस शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जनरली दिस टाइप मोशन we can face when you are traveling through crowded city. आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं गाड़ी लेके, जहां आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी स्पीड स्लो कभी ज़्यादा. तो आई थिंक स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट टाइप ऑफ मोशंस आर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स. हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पीड एंड वेलोसिटी. You know very well about speed is a scalar quantity, whereas velocity is vector quantity. And you know, in previous videos I have made it clear, very clear, that in case of scalar physical quantity needs magnitude only, but in case of vector quantity physical quantity needs magnitude as well as direction. The speed can be written as distance upon time. In previous class, in class 8th, you have learned about the speed. These are different formulas to find speed, distance upon time. If you want to find distance, distance is equal to speed into time, and time is equal to distance upon speed. I hope in coming days when you will solve numericals, these formula will help you certainly. So remember it. And in case of velocity, displacement of time taken. And I hope you have written आपने लिख लिया होगा नोट्स, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिफरेंसेस वुड बीन प्रोवाइडेड. आपको पीडीएफ फॉर्म में डिफरेंसेस प्रोवाइड किए गए थे, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड एंड वेलोसिटी में व्हाट आर द डिफरेंसेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आई होप कि आपने उसको नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा. ओके. सिमिलरली एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप जानते होंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं. एवरेज के लिए सम ऑफ ऑल डेटार्स अपॉन नंबर ऑफ डेटार्स. इन केस ऑफ स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन. उस ऑब्जेक्ट में वो सभी डिस्टेंसेस को कवर करने में कितना समय लिया, टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स, अब नाउ वी आर गोइंग टू न्यू टॉपिक, एक्सेलरेशन. Here come to acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. A very simple definition. The rate of change of velocity is called acceleration, and acceleration is denoted by small a. And now I would like to make it clear. Rate of change of velocity. For example, we have point A and B. Suppose any object स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी. ये स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी है विच इज डिनोटेड बाय u. इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआत की, यानी कि प्रारंभिक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. आफ्टर 10 सेकंड्स ऑब्जेक्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय v, एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. Initial, and you know student, this is time. So the rate of change of velocity means 25 minus 5.
20 meter per second. This change take place during 10 seconds. So we can say that acceleration is equal to, when we want to find change means maximum higher velocity minus lower velocity. We can write here final velocity minus initial velocity upon time taken. So this is the simple way to write the formula to find acceleration. Now students, we can write this acceleration also in symbolic form. A is equal to v minus u upon t, where A denotes acceleration, u denotes initial velocity, and v is final velocity, and you know t is time. So this is the formula of acceleration. Now when we want to talk about unit of acceleration is equal to, here you know this is change in velocity. The unit of v and u both belongs to meter per second. Initial velocity and final velocity, both unit is meter per second. Therefore change in velocity will also be represent meter per second. So meter per second here, and time is in second, you can write here, and this can be written as meter upon second into second, that is meter upon second square, students. Now this can be written as meter per second square, or meter into second minus 2. So students, remember the unit of acceleration is meter per second square, and you know acceleration is a vector quantity. Okay students, now we are going to tell you about, there are two type of acceleration. So see here, note these expressions, and so students, here there is acceleration topic to be continued. You know accelerations can be classified in two parts: uniform acceleration and non-uniform acceleration. Students, we can define uniform acceleration means if body travels in a straight line and velocity increases continuously. कोई भी बॉडी सीधे जा रही है और जो उसकी वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, तो दिस टाइप ऑफ acceleration is called uniform acceleration. But in case if velocity changes at non-uniform rate, so this is called non-uniform acceleration. Sometimes velocity increases and next time velocity decreases. Then this type of acceleration is called non-uniform acceleration. Students, we have two examples. For one, uniform acceleration का example क्या है? Free falling of object. What do you mean by free falling? Free falling means if there is only force of gravity and no other force is applied in any object, then this type of object is called free falling. For example, if from a height we put any object to down, किसी भी हाइट से जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जब गिरेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करता रहेगा इस वेलोसिटी में, एंड दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब जो इस टाइप का जो मोशन है वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक खास हाइट से गिराते हैं तो वो केवल फ्रीली फॉल करता है, उसमें एक्सेप्ट सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई अदर फोर्स नहीं काम करे, उसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. और जब भी ऊपर से कोई चीज़ गिराएंगे तो लगातार टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कंटिन्यूअस वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी. ओके, बट इन दिस केस एग्जांपल इज हियर,
कार रनिंग इन ए क्राउडेड सिटी, कार लेके आप जा रहे हैं, बहुत ही भीड़ भाड़ है सिटी में, कभी स्पीड आपको स्लो करना पड़ेगा उसकी, कभी डाउन करना पड़ेगा, कभी इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी डिक्रीज करना पड़ेगा और कभी आप ब्रेक लगाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इन शॉर्ट, नाउ एट लास्ट वी वांट टू से दैट एक्सेलरेशन कैन बी आल्सो सेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Negative acceleration is called retardation. When we accelerate and object gets continuous increase in velocity, then this type of acceleration is called positive acceleration or generally only acceleration. But if we apply brakes in any object which is in motion, after applying brakes, vehicle or object gets stopped after a few minutes or few seconds, then this type of acceleration is called retardation. But students, remember, positive or negative acceleration or retardation both has unit meter per second square. Okay students, so now we want to conclude, I want to conclude this lecture, and I hope you will understand, and if you be able to understand, and I hope you will like this lecture and you will subscribe the channel, due to which you can get updated and coming new video lectures. So please take screenshots, like and subscribe. Now we will meet in next video. Okay, thanks.